Merry Christmas. जिंगल Merry बेल्स गाना Christmas, चाहिए आज तो। everyone. गुड Hi, good मॉर्निंग, morning. गुड Good मॉर्निंग। morning. Merry Christmas, Good everyone. morning. अरे Good वाह morning, अनुराधा, Good morning, Chintaji. So I'm wow, Anu. Good morning. So cute. So I also wanted to wear a red dress, but my Good husband's morning, sleeping beta. till now. I could not go switch on the light and take out my red Good coat. morning. Good morning. Very good Anuradha. morning. Anuradha is in the full festive mood. Yeah, full So on. Christmas is my Thank you, favorite. Anu, for actually leading the show, and Bitti ji, amazing for wearing red, and thank you so much. So this is what I had done yesterday, all of day. Today, all day, I'm going to wear a red color. So that's ये very रेड clear. तो पहनना ही पड़ेगा। Yes. ये मेरा आज बेबी तो का पहनना ही बटरविल वे है। पड़ेगा। Intentionally wear. Like Priya, this is for my baby. Wow, Chintaji, you're looking very nice. This is Oh, for my Priya. baby, but I will Wow, just open Priya. it. Hi, Priya, you're looking very nice. Yeah, Hi, good morning. and in these festivities, we forget to wish Lord Jesus a very happy birthday. I mean, wherever he is, that biggest force that we keep studying about in our book, magic book also, there are so many quotes from the Bible and King David and all. So Bible is not written by Jesus. It is about Jesus, written by all his major followers, people who had attained enlightenment, who were totally under Jesus's teachings. So today happens to be the birthday of Jesus also. And this is the reason why we celebrate Christmas. And that force, they say, that Jesus tab aaye the jab dharti mein, like wo phase shuru ho gaya tha. Kalyug is what we call here in India. And that time he he took a human form and he was born on this earth as a savior. And he did do many, many miracles. So so that's why Christmas is celebrated, and of course Santa Claus. I don't know if you all know, he's Saint Nicholas. So Saint Nicholas originally was from Turkey. Since I come from a Christian school, so I've always celebrated Christmas a lot because it was mandate a 1 month long celebration we used to have for Christmas, and we'd buy like dresses for Christmas. कि उस दिन ये पहनेंगे, ईद पे ये पहनेंगे. So Saint Nicholas originally was from Turkey, but he lived in the northern Europe, जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है. Hence all that sleigh and snow and everything, and he's always overdressed. The red color was not signified to Santa Claus. Actually, there was a commercial later that had actually come in around, और उस commercial में Santa Claus ने ये red कपड़े पहने थे, इसलिए red कपड़े famous हुए. But Saint Nicholas actually was known for his generosity. He would always give everything to people. Not just that, even in action and kindness, he was very generous. So, उनकी खूब सारी ऐसे parables and stories हैं कि उन्होंने बहुत लोग जो परेशानी में होते थे उनको बचाया था. एक बार 3 daughters थी और उनके फादर उनको बहुत ड्रिंक करके हिट करते थे उनको. फिर बट उनके पास ऑप्शन नहीं था बिकॉज रहने को घर नहीं था. पैसे के लिए वो डिपेंडेंट थे अपने फादर पे. फादर वाज अ रिच गाय. सो लाइक और वो रोज इस करके वो अपने फादर का टॉर्चर टॉलरेट करती थी. सो सेंट निकोलस ने उन तीनों डॉटर्स को इतना पैसा दिया मतलब बैग में भर के, और कहा कि तुम लोग अब जिस तरह जहां पे भी रहना चाहते हो वहां पे रहो, जैसे जीना चाहते हो. So there are so many parables and stories about the generosity of Saint Nicholas, and he is known as Santa Claus. बहुत पहले, I think 2000 में 2088 में AD में वो आए थे, मतलब पैदा हुए थे. पता नहीं कितने साल हो गए, 1700 and something years हो गए उनको अभी तक. अगर वो अलाइव होते तो 1700 years के होते. So वो तब he was born back then. And of course, like today is also a day when people receive and give presents, and so it signifies to Santa Claus who comes on a sleigh. So all these are forces of the universe. Jesus is the force of universe, that which we call as God. So he was God even when he was there on the earth, because people could notice that there's something different about him. I mean, he would just touch someone and that miracle would happen. So he was here only to do miracles. And उनके parents, I think, किसी और city में रहते थे. So Joseph and Mother Mary, ये तो हमको पता ही होगा. So Joseph and Mother Mary, so Mother Mary pregnant थी, तो उनको अपनी city को छोड़ के बेथलेहम आना पड़ा था. So जब बेथलेहम ये लोग आए थे तो
कहीं कोई होटल रूम नहीं मिला था, तो वो स्टेबल में पूरी रात के लिए रुके थे और वहीं पे लॉर्ड जीसस का बर्थ हुआ था. So, you know that story, of course, and that was 25th of December today. So that's why we celebrate. So it is just celebrating God and a higher source, which is active in all our lives. And it's about capturing that energy of celebration. Yesterday, we had also gone out for lunch, and there was so much of celebration and amazing, like so many Christmas trees in the mall. And well, we were eating at Delhi Heights, Cafe Delhi Heights. But you know, like जब तक वो ऊपर तक पहुंचे, 4th floor तक, तब तक इतने सारे हमको Christmas trees दिखे. Every store was celebrated. Every store, like, you know, and beautifully. So this is how it is. Let's capture that energy of celebrations, joy, happiness, love, and laughter. This is the energy floating everywhere. I think from now till the New Year's, this is the kind of energy floating anywhere. And whatever Jesus' birthday or any gods, all God are one. One is all is one. This is how it is. So that energy which is there around, you know, is what will manifest things in our life, and it will make it. And मेरे घर वाले भी मुझे यही बोलते हैं कि ना इनको सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए होता है, तो मुझे एक्चुअली सेलिब्रेशन का रीजन चाहिए होता है. ऑलवेज रेडी टू सेलिब्रेट anything. I was so wanted to wear something red today, but my husband's not woken up and he's still sleeping, so I didn't want to trouble him too much. So I wanted to take out. I have got a very beautiful red jacket, but couldn't take it out. But all day long, I'm going to wear that for sure. So enjoy, celebrate, be in love with yourself, love everyone, look reasons for joy, love, and laughter in life, and make your declarations, do your scripting. Such high, powerful energy of laughter everywhere. So, yeah, just bask in that glory of love. And we come to our next chapter today. Ma'am, my elder daughter's anniversary today, 18th anniversary. How cool. She's in Delhi, congrats. Parul and Ankur. Yeah, the new friends colony one. No, they stay in Sukhdev Vihar. Sukhdev, yeah. Okay. Yeah. Wish them a very, very happy anniversary from our side. What a day to be born, right? Not born, anniversary. Married, I'm Anniversary, sorry. Married. Married. Married, yeah. Yeah. And So the whole world Marriage celebrates. again is a and this is birth my only, tree ma'am. for my grandson. I have ready करके उसका सारा gifts ready की हूँ. He'll get up and he'll be so हमने happy. भी सारे बना लिए. सो आज ऋतु मेरे घर आने वाली है, फिर मैंने सोचा मैं उसके साथ में क्रिसमस ट्री को और सजाऊंगी. क्रिसमस ट्री इज ऑलरेडी देयर. ऑल द थिंग्स दैट वी Yeah. डेकोरेटेड विद आर ऑलरेडी देयर. सो आई थॉट दैट आई विल गिव हर दैट moment of decorating the Yes. Christmas tree with me. So Ritu can now just be ready with your creativity. Okay. So today is day 18, the magical to-do list. And this is about like in our pursuit of achieving our dreams and wishes and desires. You know, there are so many things जो हमको you know, like याद आती रहती है कि अरे ये काम मेरा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मेरा पेंडिंग है. तो आज मैजिकल टू डू लिस्ट है. आज कल परसों में जो काम है आपके दिमाग में, उनको किस तरह ग्रैटिट्यूड की हेल्प से अपनी तरफ अपनी लाइफ में मैग्नेटाइज करने का चैप्टर है. दिस इज व्हाट इट्स अबाउट. And well, there are multiple things. Some people think that, oh, New Year's coming, you know, let me just get my hair highlighted, colored, change my hairstyle, go for something new. Someone might think that, oh, मुझे अपना passport renew कराना है, you know, like pending है. कई लोगों को कुछ लगता है कि ओ मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना है, ये ओकेजन था, दैट टाइम आई वाज नॉट अराउंड इन दिल्ली, यू नो, आई हैव टू पे हर अ विजिट. फिर कई लोगों को लगता है कि यू नो गाड़ी को सर्विस पे देना है, बहुत टाइम हो गया. So, you know, those kind of things, I mean, it just could be small things, it could be bigger thing, it could be finding a good cook for the house or anything for that matter. This is the thing, you know, the magical to-do list. Even if it is going to the gym and paying the money there, you know, that will also come in the magical to-do list because वो सबसे procrastinated work होता है. So that's what it's about. So we'll just see. There's a beautiful image, very, very signifying here. So magical to-do list is this list, which we will be making today. और इसके आसपास खूब सारा gratitude का golden hue है.
और वो हाइड्रोजन बलून से हाइड्रोजन ऑक्सीजन से 5 times lighter होता है. I don't know, somebody out physics might know a little more if this number is not correct. This is what I'm remembering right now. So क्योंकि हाइड्रोजन लाइट होता है तो हाइड्रोजन वाले बलून्स हमेशा ऊपर की तरफ उठते हैं. सो ऊपर सिग्निफाइज दैट यू रिलीज इट विद जॉय एंड ग्रैटिट्यूड. ओके, मतलब खूब सारा ग्रैटिट्यूड देके आप उसको सरेंडर कर दो. अब वो किस तरह से यूनिवर्स गेट्स देम आंसर्ड फॉर यू, you know, that is what this whole chapter is about. You know, gratitude karo और बस छोड़ दो, and then now you take the most appropriate action. This is what it's about. तो हम आज बहुत सारा gratitude देंगे अपनी to-do list को. So let's read this chapter. Anu, the Santa Claus is reading for us today. Thank you, ma'am. Good morning, all of you. Day 18, the magical to-do list. I quote, "The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper." Unquote. Eden Philpotts, novelist and poet. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you. And the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more, so it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do, and you are at a loss because there are only 24 hours in the day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because of something a person has asked you to do, and you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This magical to-do list practice will help you with any little day-to-day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen or how it will be done for you, and that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen. Today, create a written to-do list of the most important things you would like to be done or resolved for you
and title your list The Magical To-Do List. You might put things on your list you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day-to-day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose 3 things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you. And now it is now done, all done, all sorted, all solved for you. And you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your 3 items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember, the law of attraction says, like attracts like. And that means that when you are grateful for the solutions, as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be a magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this magical practice to attract her lost wallet back to her. After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it or even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the streets and knocked on surrounding doors. But no one had found her wallet, other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash. Her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She didn't have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again, my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that she had found her wallet. The extraordinary part of the story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning. And he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. And so he gave up and drove back to his farm with the wallet.
But while he was walking out in the fields at his farm, the wallet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called Directory Assistance. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number, and it was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number because it was an unlisted number. We called directory assistance ourselves several times after this happened, and the response every time was, "Sorry, there is no listing for that name." From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back. And as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well. And it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Magical practice number 18, the magical to-do list. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, create a written list of the most important things or problems you need done or solved. Title your list The Magical To-Do List. Number 3, choose 3 of the most important things from your list and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Number 4, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Oh, thank you so much, Anu, Santa Claus. Thank you, ma'am. Thank you. So, such a beautiful chapter this is. Like, the experience of Rhonda Byrne's daughter. I think आज Rhonda Byrne की daughter का भी day है because we are reading about her now. We will be reading about her in the hero book where Rhonda Byrne has written the experience of her daughter and her boyfriend's journey and how things started falling into place. So yeah, I mean, like, this is all coming from her because in every chapter she gives something from her own experience, that this is what we did and this is how things unfolded. Isn't it? Like, उन्होंने अपनी पेरेंट्स की स्टोरी बताई, फिर ड्रीम लिस्ट में उन्होंने अपने ड्रीम्स के बारे में बताया कि मेरे ये ड्रीम्स थे जब मेरा $2 million डेट था, $2 million डेट था, तब मैंने ये सोचा कि by the sea I will have a big ocean and all of that. So there are, like, every chapter contains certain anecdotes and some experiences from her own life. And that's what keeps all these chapters so real, because वो सब उन्होंने खुद ने वो apply किए और उन्होंने transform किए situation. So yeah, I mean, like, so ये experience जो Rhonda Byrne की daughter का है when she had lost the wallet. So daughter was partying one night and she lost that wallet. और उनको लगा कि जब वो कैब से निकल रही थी तो पता नहीं कहाँ वो कैब में ही रह गया. फिर उसके बाद शी वेंट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उनको पता लगा कि उनका वॉलेट नहीं है उनके बैग में, तो उन्होंने नेबर से पूछा, इधर उधर जो फ्रेंड्स थे, जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने डाइन आउट किया था अपने फ्रेंड्स के साथ, वहां पे जाके पूछा, तो कहीं पे भी जब नहीं मिला. देन शी वेंट टू द लोकल पुलिस स्टेशन टू फाइल अ कंप्लेन एंड टू चेक कि किसी ने वॉलेट तो नहीं दिया वहां पे. तो जब नहीं मिला तो उन्होंने फिर ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, बिकॉज सारे वो इनिशियल एक्शंस लेने के बाद देन शी स्टार्टेड पेइंग ग्रैटिट्यूड.
और उन्होंने विजुलाइज किया कि उनके हाथ में उनका वॉलेट है, और वो विजुलाइजेशन में उन्होंने खोल के उसको देखा तो उसमें सारी चीजें वैसे की वैसे इंटैक्ट थी, और उन्होंने वॉलेट के फील को फील किया अपने हाथ में, and then she said enormous gratitude for that, for the return of a wallet or finding back of a wallet, so this is what she did. बहुत सारा gratitude उसकी वजह से। जिस पर्सन को वो मिला था वो एक फार्मर था, और वो 100 माइल्स दूर रहता था इनकी सिटी से, और वो उसने भी देखा तो उस वॉलेट में कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसने वो वॉलेट को उठा के रख दिया, वो अपना काम करने चला गया, वो जो फार्मर था। लेकिन बिकॉज ग्रैटिट्यूड चल रहा था यहाँ पे लगातार डॉटर का, so this universe is only a vibrational universe. It understands the language of energy and vibration and frequency. So because the daughter was constantly visualizing, she was constantly kind of, paying gratitude for the receipt of a wallet. So because of that, there was constant nagging thought that was coming in the farmer's mind, and then he went back to his house. And then he kind of, just started calling up random numbers because usko pata hi nahi lag raha tha ki main kaise lautaun. There was no way out. So he combined the daughter's name with the Christian name, because daughter's name is a very Christian name, because Rhonda Byrne's husband was British. So उन्होंने उस नेम को ब्रिटिश सरनेम के साथ कंबाइन करा, and it was bang on. I mean, imagine, this is the power of the universe. Nothing is a coincidence in this life. So he combined that Christian name with the Christian surname, and he called up that number. And when he called up that number, the father picked up the phone, and the father wasn't even living with them. तभी लिखा हुआ ना, my daughter's father, because they were already divorced that time. So उनके फादर के पास वो फोन गया, फादर ने उठाया और उन्होंने फिर अपनी बेटी को बताया कि ऐसे फोन आया था, you've lost your wallet and you have to go and collect it. And finally she got her lost wallet back. So this is how it actually happens. Isn't it the force of the universe operating in this whole scene? So this is what Rhonda Byrne is trying to explain to us by giving this example, that it is the force of your gratitude that sets the energy into motion to achieve anything in your life. So today's chapter is about the magical to-do list, where we will be very, very grateful as if it's already done, so that that energy, that frequency gets the thing rolling and making it happen for us. किसी भी तरह से कोई इंसान मिल जाएगा जिसके थ्रू हो जाएगा। सपोज आपको अपना हेयर स्टाइल चेंज करना है, यू वांट टू गो फॉर अ वेरी ग्लैमरस लुक और व्हाटएवर, अ लेयर कट, और यू वांट टू हैव योर हेयर कलर्ड और व्हाटएवर इट इज, you will, so you're wondering that how to find that good hairdresser who can give me that within my budget. Suppose if that's going on in your mind, just put it in your to-do list. You will see that how miraculously this will come in front of your eyes. You wouldn't even know. So this is how the universe plays up. It loves that kind of a frequency where it needs bharosa, trust and surrender. That's why we always say that, okay, just write it, pay a lot of gratitude. That's our job. हमको वो करना है जो हमारा काम है, हमको सिर्फ gratitude करना है और वो चीज हमारे सामने आ जाएगी. So this is how it happens. Some your friend might tell you about, या फिर आप किसी के घर जाओगे या कहीं पे आप किसी से मिलोगे जिसका बड़ा अच्छा हेयर स्टाइल होगा और आप उसे पूछोगे कि कहाँ से कराया, उसने कहा इट्स राइट फ्रॉम हियर क्लोज बाय एंड ही इज अ वेरी गुड हेयर ड्रेसर, बहुत सालों से मेरे काम कर रहा है. दिस इज हाउ इट एक्चुअली हैपेंस. So whatever you're looking for, if you're looking for a lost thing, कोई चीज आपकी खो गई है, आप उसके लिए gratitude कर दो और सोचो कि वो आपको ऑलरेडी मिल गया है. तो आज की जो प्रैक्टिस है वो रिटन है और फिर विजुअलाइजेशन, दोनों है. विजुअलाइजेशन हमने 13 चैप्टर से शुरू कर दिया, बिकॉज विजुअलाइजेशन में बहुत पावर होती है, एज दिस इमेजिनेशन और योर ट्रू मैजिक कार्पेट. सो इमेजिनेशन इज योर ट्रू मैजिक कार्पेट. उसमें बैठ के आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. और अगर इमेजिनेशन को ग्रैटिट्यूड के साथ कंबाइन कर दिया तो उसकी पावर इन्फिनिट हो जाती है. then that thing is bound to happen. Then there is no way that वो achieve now. So this is how beautiful the chapter. इसीलिए ये वाला जो lost wallet वाला जो उनका एक्सपीरियंस है, पावर बुक में इनके डॉग का एक्सपीरियंस है. इनका डॉग ही खो गया था बिकॉज ये लोग रेलोकेट हुए, कैबी नाम था उसका. तो इस तरह से जब पहले वो रहते थे ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद यूएस आए एलए में, वहां पे उनके डॉग ही खो गया. और फिर वो चला गया था, मतलब उसको पता नहीं, उन्होंने कुछ वो जो बेल्स एंड घुंघरू जैसे बांधते हैं वो बांधा हुआ था. तो अब कैबी निकल गया घर से, और किस तरह मतलब इनकी डॉटर, वो तो डॉटर के बेड पे साथ में ही सोता था कैबी.
So वो चला गया और daughter was very troubled. Even Rhonda Byrne की मतलब कहाँ चला गया? That dog was so much like just a family to them, and they were very very attached. Especially the daughter was very attached. She won't even eat without him. It was like that. और फिर किस तरह उन्होंने विजुअलाइजेशन और इतना सारा ग्रैटिट्यूड दिया, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज कि जब भी हमारी लाइफ में कुछ गड़बड़ होता है ना, हमारी एनर्जी उसकी तरफ नेगेटिव होती है. आई मीन इट गोज विदाउट सेइंग. कोई भी चीज, जैसे अगर हमारी कोई गोल्ड की चेन खो गई है तो हमारी नेगेटिव एनर्जी है कहाँ चली गई, अब हम परेशान होते हैं. एंड जो अभी तक हम ऐसे ही लाइफ लीड कर रहे थे ना, हमारा कोई बहुत ही वैल्यूबल चीज खो जाती है या कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, सो वी बिकम वेरी वेरी वरीड अबाउट इट. So वो परेशानी वाली energy attracts more परेशानी in the life because it's a vibrational world, hands down. Okay, so changing the energy is very very important. So अब वो परेशानी वाली energy, इसीलिए रॉन्डा बर्न ने इस चैप्टर में लिखा है, instead of being problem oriented, please be solution oriented. Solution oriented means have that energy of success and victory in achieving whatever it is that's making you worried right now. Okay, as if it's already done. सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, है ना. स्पेशली जब जैसे वॉलेट खो गया तो मुश्किल तो होगी ना, दिमाग में रहेगा कि कहाँ चला गया, ओ गॉड उसमें मेरे सारे डेबिट कार्ड्स थे, इसमें ये भी था, उसमें वो भी था. उसमें मतलब कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं, बिकॉज कभी कभी हमारे वॉलेट से बिल्कुल एनसाइक्लोपीडिया ही होता है. सो नाउ विथ ऑल दोज थिंग, ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसमें. सो विथ ऑल दोज थिंग्स गॉन, देयर ऑब्वियसली विल बी अ फीलिंग ऑफ वरी एंड कंसर्न. सो लेकिन उस एनर्जी को, जब तक वरी एंड कंसर्न की एनर्जी है, तब तक हमें वो वॉलेट मिलेगा भी नहीं. ठीक है, बिकॉज सारी एनर्जी हमारी लाइफ से जो रेडिएट हो रही है, दैट इज सारे वरीड थॉट्स, ऑल बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी. टिल द टाइम देयर इज बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी, happiness, victory, success, love will not come to our life. That's very clear. So immediately change that energy into success and victory. So now that I have received whatever thing that you wanted to do, like if you want to look for a cook for your house, so instead of just worrying कि अभी तक मिल नहीं रही, 4 दिन हो गए, बड़ा मुश्किल हो रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, करंट वाला ऐसा चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, टाइम नहीं मिल रहा. So instead of focusing on that side, we will focus on the right side of it, that you already got a cook, and thank you universe that how beautiful this cook is, makes such amazing tasty food and very good parathas and very good this, and makes such a good Thai food also, and she's so much within my budget, thank you universe. So if that is the energy, you will see that energy will roll and magnetize that cook into your life. Someone will tell or something, how mein to humko jana nahi hota, but this is how it just gets done, and it is so beautiful. So we will use that magnetic force of gratitude into having all these little things in life which have been pending answered. So आज के assignment में हमको पूरा वो written list बनाना है of all the things that we want to get done. It could be paying a visit to a dentist. हो सकता है आपकी कुछ issue चल रहा हो dental उसमें, और procrastinate कर रहे हो, तो आज procrastination वाली चीजों को list करने का दिन है. लेकिन जिन जिन चीज में हमको लग रहा है हम कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इस 1 जनवरी से हम जिम ज्वाइन करेंगे, हम अपनी रेगुलर वॉकिंग एंड रनिंग शुरू करेंगे 1 जनवरी से. Today is the day and now is the time. Please put it on your list that you will start your hardcore workouts. You will seriously lose your body weight, or you will, wherever you wanted to join a club or wherever, diet consultant or wherever, do that today. Don't wait for tomorrow because tomorrow never comes. This procrastination की जो आदत है, इसको हमको बहुत जरूरी है डील करना, और ये सब में ही होती है. इट्स नॉट जस्ट इन वन पर्सन, इट्स लाइक सब में थोड़ा थोड़ा होता है. ठीक है, कल देख लेंगे, अच्छा ठीक है परसों देख लेंगे, अभी 2 दिन बिजी है, उस दिन देख लेंगे. So just put it in your list and imagine it's already done. It has to be that. So just do that today. This is what. और आज कितनी भी लंबी लिस्ट बना सकते हैं. It is not that उसमें से हमको 3 या 4 या 5 ही करने हैं. Your list can have like 9 things. Your list can have 10 things, that everything what you need to get done. So this is how we need to make it. उसमें से हमको 3 topmost choose करने of great importance. Suppose आपने 9 things लिखी, that going to my friend, to see this, या किसी के यहाँ पे बेबी हुआ है तो आपको वहाँ पे जाना है उनके बेबी को देखने के लिए,
एंड जो भी शगन देना होता है हमको तो उसके लिए जाना है। तीसरा कुड बी गाड़ी को सर्विस में डालना है। फोर्थ कुड बी टू बाय अ ड्रेस फॉर दैट ओकेजन। द फिफ्थ वन कुड बी कोई ऑफिस का काम हो सकता है जो पेंडिंग चल रहा है उसको करना है। सिक्स्थ है कि कोई चीज खो गई है उसको ढूंढना है कि वो कहाँ चली गई। सेवेंथ है तो उसको क्या करना है। सो दिस ऐसे करके हमको 9, 10, 11 जितनी भी आपकी लंबी लिस्ट हो सकती है उसमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंस वाली चीजें चूज करनी है कि ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, है ना, जो आपको थोड़ा नैग कर रही हैं। सो वो वाली 3 आपको चूज करनी है और उसमें आपको बहुत सारी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी डालनी है। सो अब लिख के करने वाली प्रैक्टिस है। अब वो जो 3 हमने टॉप मोस्ट चूज किया और ग्रेट इंपॉर्टेंस वन, तो उनमें से एक एक करके वी हैव टू विजुअलाइज देम। So whatever first is, suppose it could be going to your friend's place or whatever, like to pay a visit, क्योंकि कोई occasion था आप उसको उसमें नहीं जा पाए थे तो आपको बस उसको प्रेजेंट देने जाना है, गिफ्ट देने जाना है। सो आप जाके आप इमेजिन करो कि कितना अच्छा टाइम था, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि आप अपने घर वापस आ गए हो जाके, कि कितना अच्छा टाइम था, इतना मजा आया, इतना सारा लाफ्टर था वहां पे, इट वाज सो अमेजिंग, लाइक यू फेल्ट सो गुड दैट थैंक गॉड आई वेंट देयर, लाइक इट वाज like the one of the best times of your day that you had spent there, and that's it। और उसके लिए massive thanks बोल के, enormous thanks is what Rhonda Byrne has written, say give enormous thanks in return for that thing having gone so perfectly well, no there was no traffic, आराम से आप चले गए, आराम से आप आ गए, इस तरह से। और फिर आप दूसरी चीज पिक करो, उसको फिर से विजुलाइज करो, है ना, अच्छे से कैसे वो सक्सेसफुली हो गया, सारा काम हो गया। थर्ड could be maybe something has been missing in your house, maybe some piece of jewelry or some bag or something or some dress, आपको लग रहा है कि मुझे वो ड्रेस बहुत दिन से नहीं मिल रही है। सो अगर ऐसा है तो आप उसको विजुलाइज करो दैट वो ड्रेस आपको मिल गई है, एंड देन यू वेयरिंग फीलिंग सो गुड अबाउट इट, एंड एंड यू थैंकिंग द यूनिवर्स इवन लेटर दैट थैंक यू फॉर टेकिंग मी टू दैट ड्रेस एंड ब्रिंगिंग इट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। So this is how. So it is writing practice plus 3 का visualization. So Rhonda Byrne ने इसमें ये भी बताया हुआ है कि एक दिन में 3 का ही विजुलाइज करना है। Although आपकी लिस्ट में 10 थिंग्स हैं, ठीक है, तो आपको 3 का ही विजुलाइज करना है, बाकी के 3 का उन्होंने बोला है कल विजुलाइज कर लेना, some other day, उसके बाद जो बाकी के 3 है उनको some other day. So this is how we need to do it. So today I could not make host to anybody. Yes, ma'am. Please Our make me the girls were co-host. not there. Both of you were not there at 6 o'clock, so I could not. No, ma'am. I joined 10 minutes before 6. अच्छा, पता नहीं, मुझे दिखा ही नहीं, मुझे दोनों के नाम नहीं दिखे। अच्छा जी। चलो मैं मैं भी एक को थी बना मैम। दिया, मैं प्रिया को भी बना देती हूँ। Thank you, ma'am. हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्यों मैम? बट आइडियली हम सबको अपने अपने म्यूट बटन खुद ही कंट्रोल करने चाहिए ना, इतना सा तो थोड़ा सा रेवोल्यूशन हम अपने अंदर ही लेके आ सकते हैं। तो अपने डिवाइसेस को अगर आप बार बार फिंगर नहीं करोगे तो फिर वो नहीं होता है अनम्यूट अपने आप से। सो लेट्स गेट अ लिटिल मोर रिस्पॉन्सिबल, मे बी ट्राई एंड डू दैट। ओके। So yeah, this is what it is about the practice, and तो बहुत beautiful practice है। आज और सोचो हमको क्या क्या करना है। As मैं बोल रही हूँ तो मेरी भी एक ड्रेस नहीं मिल रही है बहुत दिनों से, so I need to find that, so that will go into my to-do list today. So, and multiple other things that we need to do. Okay, so the practices are this only, that in the morning we need to do a count my blessings, where we have to count some different small blessings that we may not have realized it so far. So आज हम उनको फिर से गिनेंगे, है ना, अलग अलग नई नई चीजें, उनको रीड करके 3 बार थैंक यू बोलेंगे। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जिसमें हम पत्थर हाथ में लेके बहुत अच्छी डेज मेमोरीज को कैप्चर करेंगे, दोस कोडैक मोमेंट्स ऑफ द डे। So we'll capture those Kodak moments of the day. So, and then figure out which was the best out of this. Sometimes that can be very, very confusing. So you can leave it to the universe. You can pick up both. This is what I do. I say that you don't ask me to you don't expect me to pick up one, because both of those were very beautiful. So you can pick
two up also sometimes when you're very, very confused. Okay, then universe, now you decide which is the best one for me. This is what I like. And then with some good affirmation, you can actually go to sleep. Give some good word of thought. Don't make big, big sentences when you're very, very sleepy. Okay, sometimes it takes like technicality में चले जाते हैं, करेक्ट इंग्लिश, रॉन्ग इंग्लिश, सही बोला, गलत तो नहीं है, इसीलिए वर्ड्स फीड कर दो, वर्ड्स की सीड सो कर दो सोने के पहले, है ना, सेंटेंस के चक्रों में मत पड़ो. वेल्थ एंड सक्सेस आर इनफ. Okay, or you just want to sow in love, victory, please put those. Amazing health, put those seeds into the subconscious mind just before you go to sleep, after you've done your magic rock practice, and then you go to sleep with that amazing health. Okay, so this is how it is. So that we wake up very, very fresh with that kind of an energy which was multiplying and brewing when we were sleeping. Okay, because subconscious mind becomes super active when the eyes are shut और जब हम deep sleep में होते हैं. Conscious mind पूरी तरह जब तक shutdown mode पे नहीं जाता है तब तक subconscious mind doesn't awake so much. Okay, it starts getting up when we are sleepy, but then full on वो तब काम करता है जब conscious mind पूरी तरह shutdown हो जाता है. इसका मतलब है deep sleep में. So deep sleep में आप जो बीज डालोगे, जो seeds सो करके सोगे, of course that's going to multiply, brew, become taller, become more flourished, and etc. And then you're waking us, and it is making it happen for you. Okay, and it goes deep down in the subconscious mind, and we know that whatever we see in our environment is what this, depending upon the seeds that we have sown in our subconscious mind. So this is what I'm reading once again. Ask and it is given. This book, thick book it is. So in the morning also I read because holiday time hai. 3 दिन का holiday time है, Saturday, Sunday, Monday. So I'm watching movies, I'm reading books, I'm just like in my own zone, sleeping before 9 o'clock. Yesterday I slept very, very early, I think 8:40 or something. So the days are so beautiful and relaxed. And when I wake up in the morning, I'm so fresh, So this is like a perfect holiday time. No rush, no ये करना है, वो करना है, वहां जाना है, ऐसे दिखना है अपने ही zone में. And reading and enjoying and, just like that perfect holiday season is relax, love, laughter, joy. That is the kind of time I'm having these days. So which is so good. And of course, like just stepping up the affirmations, I'm doing much more than normally do on the rest days. I mean, like on the working days. So much more, so many affirmations, so much gratitude for things that I've never thought of, So even in my mind, something goes on, all the good things, So itne hunches aa rahe hain, mujhe itni inspiration aa rahi hai. It's just so beyond perfect. Okay, so this is how life is like. So enjoy. Now we go to the other book. So आज की practice में यही है written. हमको पूरी टू डू लिस्ट बना के 3 टॉप मोस्ट चूज करके मिनिमम 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है एज इफ दे ऑलरेडी डन, और बाकी के जो है 3 करके रोज रोज करते जाना. So that is what this chapter is all about. Now we go to the other book, The Hero by Rhonda Byrne again. And Mrs. India, Priyanka would be reading for us. Thank you Which so is- much, ma'am. There are so many centers for me today. You are the one. Everyone, of course, is a center. Priya is the one who arranged this session for me, and Bitty is the one who has given me her slot. So thank you so much to everyone. Yeah, so both Anuradhas literally become a Santa Claus today with the cap and Santa's dress. And Bitty ji, you've actually become Saint Nicholas today to have given your slot to Priyanka to read. Yes, ma'am. It's The my real pleasure, Santa ma'am. Claus. It's my pleasure. And This Priya, was you a- are a forever Santa to everybody. Thank you so much. Hanji, please Thank you, start. ma'am. Commitment and the universe. My daughter's boyfriend had a secure and safe job, and he knew if he worked really hard in his job over 15 years, he would gradually climb the corporate ladder within the organization. But this job was far away from his bliss. He did work really hard, but only so that he could do while he loves to do more than anything else in the world, which is suffering. So this young adult made a big decision. He You'll have to decided read that again. It's not
suffering, it is surfing. Surfing. Actually, ma'am, I tried to keep this tree behind me, so I am reading on my mobile. I wanted the proper Christmas And tree and all that. oh, cool. Doesn't matter. What you can do is just read this sentence again because वो Yes, दो sure. चीजें didn't mean, yeah. So, but Yeah, this yeah, job. sure, ma'am. Sure. But only so that he could do what he loves to do more than anything else in the world, which is surfing. So this young adult made a big decision. He decided he was going to follow his bliss. Over several months, he laid down plans to leave the corporate world and begin his dreams of shaping surfboards. True to his word, he resigned on the exact day he had committed himself to, with nothing but a dream and his commitment to it. Here is what the universe lined up for him: a successful local shaper. Let him come and watch his shape surfboards. He was given free shaping lessons from another shaper who showed him how to make some shaping tools to save even more money. A grape a grape light, um, uh, a A grape graphic light, designer, a graphic graphic. designer. Actually, my video sign is coming, icon is coming. Ah, वही. Designer helped him with his logo for his new business free of charge. A surf supply store gave him wholesale prices on items he needed. He was given equipment, lights, and shelving from his dad to set up his shipping studio, and he was offered free rent on a space to set up his studio, which has the most breathtaking views of the ocean and California coast that anyone could dream of having. And wherever he goes, people are asking him to shape a surfboard for them. All of this happened in just few weeks in just 2 weeks. That's the swimming that's the summoning power of the universe when you make a commitment to your dream, and the privileges that will rain down upon you when you follow your bliss. Yeah, so this is about her daughter's boyfriend, who was into a corporate job, a very well-paying job, but he did not, that was not his ikigai, that was not his bliss. So he decided, because उनको surfing का बहुत शौक था, तो उन्होंने one fine day, he's just decided that this is not my thing and I want to start my own business. And then he went into making or shaping the surfing boards, and then he started doing it, and how that commitment ki wajah se the universe collided, and everything, people, situation, circumstances came. He could open his own store where he could start selling it by the ocean. बहुत सुंदर उनको स्टोर मिला, फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. कोई ट्रेनिंग के लिए मिला, who trained him into how to actually shape the surfing boards. And then finally he started getting a lot of orders, and then he became super successful. And all this happened in just 2 weeks. So it says that is the summoning power of the universe. When you really want something so badly, when you want to be number one at doing that, when you want to be the happiest, when you want to be the healthiest, you are ready to do anything for it. And he did not need to do much. Why? Because work on yourself. Everything outside gets fixed. This is how it actually works, right? So that is the summoning power of the universe when you make a commitment to your dream. And the privileges that we think, that will rain down on us, blessings of the universe are going to rain down on us when we are so committed and we follow our passion. हाँ जी. प्रियंका. मे बी आप म्यूट पे हो. She's not mute, but I think she got frozen, ma'am. अच्छा, नेटवर्क इशू. Network issue है.
Acha. You want to read this, Priya? Maston Cape till she comes back. Okay, ma'am. Yes, ma'am. Maston Cape. I was reading. Am I Oh, but audible, Priya? now you are. Now you are. Now you are. Yes, Okay, please actually, read, I was ma'am. reading. I don't know, might be a network issue. Yes, ma'am. Yeah, network issue. It Meston was a Cape, lag actually. if you have now, am I audible, Priya? Can I continue? Meston Cape, if you have a dream, don't make a plan B. Will Smith said that if you have a plan B, you are going to end up at plan B. You need to be all in all in on plan one, plan A. All your love, all your faith, all your energy, all your determination. Yeah, this is something I see so often around me all the time that पहले से ही यूनिवर्स को सेकेंड ऑप्शन भी हम दे देते हैं, नहीं देने की जरूरत है, अगर हमको यही करना है तो हमको यही करना है. Suppose if you want to wear a particular sari to a wedding, okay, so you have to wear that only. ऐसे नहीं कि मैंने दो निकाली है, या तो मैं ये कर लूंगी या मैं ये कर लूंगी, या मुझे वो दो ऑप्शंस हैं, या तो ये कर लूंगी या मैं वो कर लूंगी. दैट मीन्स इट इज अ कंफ्यूज्ड प्रेयर. So what does universe give? Because आपने ऑलरेडी प्लान बी को भी, मतलब सेकेंड ऑप्शन को भी लेके रखा हुआ है अपने साथ में, कि अगर ये वाला काम नहीं होगा ना तो फिर मैं ऐसे कर लूंगी. क्यों नहीं होगा? वो तो करना ही पड़ेगा ना. मतलब you have to go only on one. You can't put your feet in both the boats and sail. It's not possible. So that's what. So this is something we need to remember, that means faith नहीं है ना. जैसे मैं कि हमको ये दो गिफ्ट्स देने हैं, किसी के यहाँ पे जाना है, दो गिफ्ट्स देने हैं, या तो मैं ये दे दूंगी या ये मैंने नहीं. अगर आपको वो देना है ना, आप उसमें इतनी ब्लेसिंग डाल दो in advance and go and get that only because you wanted to give that. Don't go for plan B. So that has to be very very clear, because अगर वो फिर डाउट वाला फेथ, फिर फेथ है कहाँ? If there is a doubt, if there is a fear, or if there is inconclusiveness in our prayers, कि नहीं ये नहीं होगा तो चलो वो ही कर लेंगे, doesn't work like that. If you want to do something, put all your energy into it, and very beautifully it definitely unfolds. It is just about frequency, energy, and vibration. Keep that high and focused. Yeah, one sec. Yeah, Laird Hamilton. Laird Hamilton, you, you have a backup plan. You know that no, ma'am again. No matter what, if only my pinky words, I can still pull something off. But it's not one you are going to use. And if you start to focus on it, then it will become your plan. You can give yourself a reassuring safety net in your mind by knowing that no matter what happens, you will be all right. But if you seriously create a plan B, you risk that being the plan that your subconscious mind materializes. Give all of your attention and focus to plan A, and that will be what materializes. Yeah, so all are saying the same thing, that don't give yourself a second option. Okay, everybody saying that if you really want to do something, just do it. If you really want to do it, they will always work a way out and surrender. Like on 30th year, all the Delhi people, so Inamina have planned a good send-off year or a New Year party or whatever you call it, like a get-together in Delhi of all the people. Anyone who wants to join, of course, from Chandigarh and all can on 30th morning. So it's a full-on working day. In fact, I know that I'm very busy that day, but I just said yes, because it's an afternoon party. I might be busy in the evening or later. I just said yes, and then I wrote it down in my this thing, that thank you, universe, that we had the best times possible, and everyone who attended that, is seeing miracles happening in their life, and their 2024 will be the best year of their life. So now it's already done, already written. I don't know. I'll go to work tomorrow and see that how I can make it on 30th. It is seemingly, worldly wise, it is impossible for me to go at that time around 12 o'clock in the afternoon. But I know that it will just work out. I mean, my other plan will get shifted, it will get moved. So that is the bharosa I have for it, that I'm going to do it no matter what here.
and then, well, I mean, like office, I'm very committed to. There's no doubt that I'm really, maximum, I might need to be logged in, which is okay. I can open my laptop, answer the mails, and give approvals and all of that. So that I can do, which is all right. But this is very clear that my presence is there 101%. There's no doubt about it. And everything else will go in a very magnificent way. Because if the energy is already put into it, and with the blessings, not just for myself, but everyone who's there at that get together, everyone who's made an effort to do it, unprioritized it. So their lives are, I will ensure that your lives are changing. This is very, very clear. Okay, so this is how. So there is no second option कि अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं ऐसा कर लूंगी, या वो शाम वाला मैं थोड़ा शिफ्ट कर लूंगी. इतनी स्ट्रैटेजी, इतना दिमाग यूज करने की जरूरत होती नहीं है हमको. ठीक है, you just float your request and it is done. Simple. ठीक है, parallel universe में it is already created. There are no two ways about it. So it is already done. बस ठीक है, बाकी सब भी अपने आप will fall into place. There is not a single doubt or a worrying thought in my mind that how am I going to make it, and this is happen and that will happen. Okay, so this is how easy life is, which we complicate by thinking too much and overthinking. There is no reason to do that. We set up impediments, blockages, obstacles. We create them from our mind. Nobody is so busy in the world. Everyone has time for everything. Life is easy, simple, effortless, and let's keep it that way. Keep things uncomplicated. So that's very important. Don't overthink. Don't overuse the head so much. Everything falls into place when you're calm. So this is what we say, that in survival mode, you cannot create. But in a very calm state, there is a very massive creation that's happening all the time. You think and it happens. You think and it happens. This is how beautiful life is. Yeah. 1 second. Oh, then there's a new topic, determination, and we can just start it, Priyanka. Yes, ma'am. Determination, Lord Hamilton. You have to be undeterred and relentless in your pursuit of your dreams. Yeah, very, very clear. This is where I want to be. That is it. Bas ho gaya. ठीक है, वो journey universe will decide. You just have to be focused on the end result. That's it. आगे पीछे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. It is to do with the other things in life as well. अगर आप में से किसी को looking for a partner and want to get married, want to live in with that partner, जो भी आपको, जैसे भी आपका जो goal है, that you want someone who can make you feel loved every single day of your life, then just think about the end result. Don't get into how, where, when, all the technicalities of it. That just see that you're enjoying a beautiful life with a partner who's so much the unifying factor that is holding both sides of the families together, who's giving you so much joy. You all are best friends to each other. You laugh a lot. You host parties together for your friends and family, and like that kind of a joyous life, very, very loving and supportive towards each other. You both are each other's cheerleaders, etc., etc. Just be focused on that end result. Don't decide the journey. Okay, so journey is universe's work. So, but then be undeterred and focused that you want it. Don't let doubt seek in. Sometimes there are delays that happens for good, that helps you redecide your goal. There are sometimes delays we create. Universe is, उसमें कोई time and space gaps नहीं होते हैं. Okay, delays comes from our brain only. It's our brainchild. So we need to kind of just have a little more faith in the universal powers, because the impact is huge and it will unfold in the most beautiful way. Yeah. GM Rao, once I made a commitment, the determination to make it succeed was born. Yeah, so simple. So once you've made a determination and commit to that determination, succeed is born, success is born from there only. So the moment you've done it, it says no, that 60% of your work is achieved the moment you've made a determination. Like that plane flying, I always give you that example. जब flight take off करती है, तो take off में 60% fuel consume हो जाता है flight के.
ठीक है, और बाकी की वो जब वो सेल हो रहा होता है ऊपर हवा में, ठीक है, तब उसका और लैंडिंग में 40% होता है। सो इसका मतलब है जब आपने डिसाइड कर लिया, कमिट कर लिया, जब आपने ये सोच लिया दैट दिस इज वेयर आई वांट टू रीच इन माय लाइफ एंड यू टेकन इट ऑफ फ्रॉम देयर, so your the success 60% success is already decided then only. Okay, so in one of the books I had seen this example and this was like really beautiful. And this is how it is. So the moment you've made a commitment to something that this is how I want to do it and this is how I want things to unfold, you will see a miracle happening in your life. So get used to miracles. I think, are we done or? Yeah. So thank you, Priyanka. This is how much we'll be able to read today. Thank you so Thank much, you. ma'am, and thank you. Yeah, thank you so much. And thank you everyone who are giving away these slots for someone else to read, who've not been reading so much. So thank you, because जो बहुत ज्यादा टसल में वर्क होता है, तो उन लोगों को रीड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, because rest of the days वर्क होता है, तो चलो छुट्टी वाले दिन is when they can read. So thank you, Bitty ji, for doing that so much. It's my pleasure. So we had two people who wanted to share yesterday. One was Poonam ji and Dr. Today Nakul. is Shweta's birthday also, Shweta Nanda's birthday. Oh, hi Shweta. Wish you a very, very happy birthday and a world of happiness and success. And Nutan's dad's birthday also. Oh, okay, Nutan. A very happy birthday to your dad, and may he lives a happy, long life and celebrates his, all the remaining years that he has with all of you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yes, Ritu, you want to share something? There's only one hand raised. बोलो बोलो, unmute करो और बोलो. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. कैमरा भी ऑन करना होता है. हाँ दीवार मैम, से कैसे बात करते हैं? हाँ मैम, कैमरा भी वो करना है, बस मेरा मेकअप थोड़ा सा रह गया. मुझे मेकअप लगा रह कि गया थोड़ा सा. हाथ हो गई. सुबह 6 बजे तो मेकअप करके बैठोगी. हाँ मैम, मुझे लगा कि कोई और शेयर करेगा, जब तक मैं अपना मेकअप डन कर लेती हूँ. अच्छा ठीक है, चलो तब तक हम आरती जी की शेयरिंग लेते हैं. आप अपना मेकअप कीजिए. मैम मेरी शेयरिंग नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन है. कैन आई आस्क? ऑफ कोर्स. मैम मैंने अभी कुछ डेज पहले ही स्टार्ट किया था 369 आपसे बात करके. तो कल गेस्ट आ रहे थे, डिनर था, और मैं कल रात वाला भूल गई. क्या करूं अब? डजंट मैटर, आज आप नॉर्मल कर लीजिए, और वो वाला जो 9 का था आप पहले उस 9 से शुरू करो ताकि वो साइकिल सेम रहे. ठीक है, डोंट ठीक है. वरी, अभी अमेरिका में अभी भी कल ही का दिन चल रहा है. ठीक है. अभी भी थैंक 25 ही यू. चल रहा है. पहले वो थैंक यू सो 9 मच. आप कर लीजिए, उसके बाद आप 369 आज वाला ओके, करना. थैंक यू. ठीक है, थैंक डोंट ब्रेक दैट साइकिल. या थैंक यू सो थैंक यू. मच. थैंक यस यू सो पूनम मच. जी. Good morning, everyone. गुड Merry मॉर्निंग. You'll have to Christmas be to a little everyone. louder. Yeah. Good. Okay. Can you hear me now? Can you hear me? Yeah, very I mean the voice very Okay. low. Just a minute. Anyone else? Dr. Nakul, are you there? He doesn't seem there, ma'am. Sunita ji's hand was raised, ma'am. Sunita Govil. Acha, yeah, please share. Sunita ji, if you're there on the call. आई थिंक पूनम जी बोल रही हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई थिंक वो बिल्कुल ही चला गया अभी. पूनम जी, हो सकता है आपने ब्लूटूथ लगा रखा हो ना, तो उसका वो हटाया ना हो. हाँ, वो मैंने हटा दिया, साउंड वही उसी की वजह से हो रहा अभी था. उसके ठीक बाद आई है. गॉट हाँ डिस्कनेक्टेड. अभी ठीक है. Okay. Okay. So my sharing is, few days ago, I think 3-4 days ago, there was this chapter where you have to rewrite your 10 most desired wishes. चैप्टर It was 13. just, about few days ago. So that day, my wishes used to be big, ki my daughter get married. Wo. So then I came to the small dishes, of wishes, which you can see realizing soon. So what happened? My wish was I had ribbons. My first
ब्रांडेड वो रेबन थी. इट वाज व्हिच आई बॉट नियरली मोर देन 10 years ago, which I lost few years ago. उसके बाद मैंने बर्बरी की है, पराडा की है, टिफनी की है, और भी छोटे छोटे हैं. बट जो रेबन की जो एक्चुअल में है वो मेरे को अच्छी लगती हैं एवरीडे के लिए, जो उसकी क्लासिक वो है. सो आई रोट रेबन. उसके बाद मैंने शूज लिखे वैसे जस्ट लाइक वैसे कि शूज लिखते हैं. आई लव वेयरिंग, आई गॉट गुड कलेक्शन. तो मैंने शूज लिखे ब्रांडेड, ऐसे लिख दिया ब्रांडेड शूज. सबके पास स्निकर्स तो होते ही हैं, बट जो एक्चुअल में फॉर्मल वेयर वाले वो मैंने वैसे ही लिखे. शूज की जगह मैंने फुटवेयर लिखा. ओके, तीसरी चीज क्या थी? बैग. जस्ट लाइक दैट, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं देखती हूँ कि मेरी विशेष ना जो बड़ी बड़ी हैं वो, you would not believe that night only, the day I wrote this, that night only I found Ray-Ban on special. ओके, और ये तो चलो रेबन मेरे को स्पेशल्स पे बड़ी अच्छी मिल गई, पर अगले दिन का बताती हूँ. द फॉलोइंग डे वी वेंट टू द शॉप्स. तो वी वर पासिंग बाय दिस डीएफओ, हमारे घर से थोड़ी दूर है. एंड माय हस्बैंड सेड कि जाना है, हम लोग उस तरफ गए थे. तो मैंने कहा मुझे कुछ चाहिए से, पर मेरे पास ना मरून कलर के, वाइन कलर के फुटवेयर शूज देख रही हूँ. आई गॉट सम लिटिल चैलेंज गोइंग विद माय बिग टोज. तो मैंने कहा मेरे पास, मुझे पॉइंटेड नहीं चाहिए, मुझे फ्लैट और ब्लॉक हील, और जो मेरा पूरे पैर को कवर करे. यू वुड नॉट बिलीव एवरीवन, इट्स अमेजिंग. सिर्फ ये मैंने कहा हम लोग चलते हैं. तो हम लोग गए वहां पे. तो ऐसी मैं जा रही थी एमके का शोरूम, जैसे माय हस्बैंड वेंट टू पोलोस शोरूम, उसके सामने एमके का था. मैं वहां पे शूज देख रही हूँ एंड ही केम आफ्टर मी. तो ही इज इनटू कि स्नीकर्स ले लो. मैंने कहा नहीं, मेरे को ये चाहिए. और वहां पे वो पड़े हुए हैं, मरून कलर के पड़े हैं. इट वाज माय साइज. बहुत अपीलिंग नहीं थे, बट कंफर्टेबल थे विद द एमके लोगो. एंड आई टोल्ड हिम कि लुक, मैंने आपको रास्ते में ये कहा है, तो ये यूनिवर्स की कॉल है, लेट मी बाय दिस. ही सेड ये तुम्हारे पैर में इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं है. मैंने कहा दे आर कंफर्टेबल, और ये चीज मेरे को यहाँ पे लेके आई है उस शॉपिंग सेंटर में. बट ही हिम बीइंग हिम कहते नहीं, तुम ना कोई बैग ले लो, शूज रहने दो ये ना. और वो जो ऑफ वाइट शूज थे, जो शू थे, वो कह रहे मैंने, वो मेरा साइज नहीं था, विच ही लाइक्ड, विच वर लाइक स्नीकर्स. तो ही सेड गेट अ बैग. मैंने उस लिस्ट में बैग भी लिखा था जो मुझे नहीं चाहिए था, जो मेरा लेने का भी कोई विचार भी नहीं था. सो वी केम, फरला का शोरूम गए. वहां पे एक दो शोरूम्स में गए, तो इनको ना, जो because he was with me, so he had to pay, so he wanted the stuff of his own choice. He bought me a bag. ओके, हम लोगों ने सिर्फ यही लेना था. 1 घंटा हमने इधर उधर घूम के, हम लोग पोलो की शू, उनको कुछ नहीं पसंद आया. हम लोग 1 डेढ़ घंटा वहां पे रहे हैं. वो शू वाली लेडी को मैंने बोल दिया, मैंने कहा ये शू यहाँ पे रखना, आई विल कम बैक विद इन 2 hours एंड देन यू कैन पुट इट बैक. दैट वाज द लास्ट पीस. So I was telling him, look, I believe in universe. He didn't listen. Okay, मेरे को बैग लेके घर आ गए. और मैंने इनको कहा, मैंने कहा you know what, लिस्ट दिखाई. मैंने कहा देखो ये क्या लिखा हुआ है. द फॉलोइंग. कहते अच्छा मैं जाऊंगा, ऑफ वाइट कलर के अगर तुम्हारे साइज के होंगे ना, मैं वो बूट ले लूंगा. मैं अगले दिन आई वाज बिजी. आई हैड माय क्लाइंट गॉट कैंसल. आई हैड barely 2 सवा 2 घंटे थे. तो आई रश्ड. वहां पे मेरे को ऑफ वाइट शू नहीं मिले. मेरे को, आई बॉट दोज शूज. तो मैं अब आपको वो लिस्ट बता रही हूँ कि उसमें बैग लिखा था. तो वो शूज तो मैंने ले लिए द फॉलोइंग डे, बट वो बैग नहीं मिलना था. तो मैं सिर्फ ये छोटी सी चीज बता रही हूँ कि अगर आपकी शिद्दत हो, छोटा सा वो, ये दोनों चीजें मेरी रियलाइज हुई एंड आई वाज अमेज्ड कि वाह. तो ये मेरी शेयरिंग है. इससे अगर कुछ लोगों की बड़ी बड़ी चीजें अभी नहीं हो रही हैं, तो पहले आप छोटी से अपने सपनों को छोटा सा कर लो. बट वो कहते हैं कि सपने पूरे देखने चाहिए मेरे. सो दिस इज माय शेयरिंग. दीप्ति जी, आपने मुझे कहना है कि बड़े सपने कैसे होंगे रियलाइज, आई डोंट नो, बट दिस वाज ऐसे माय छोटे छोटे शेयरिंग. करके ही बड़े सपने पूरे होते हैं. तो इस ये ऐसे तो छोटे छोटे, जब शेयरिंग, छोटी इट वाज छोटी चीजें अमेजिंग. हम रिकॉग्नाइज. हम्म. तो ये तो शेयरिंग, तो ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मेरी 1 दिन 2 दिन में ही अपने आप वो आई हैं, जो मैंने कभी, मेरे को स्पेशल पे नहीं नजर आई, कभी मैंने ली भी नहीं. आई हैड दिस विश कि मुझे एवरीडे यूज के लिए चाहिए. एंड वो जो शूज, ब्रांडेड शूज, कहा एमके के, मेरे फॉर्मल शूज मेरे
आए अगर उस दिन मिल जाते तो वो बैग ना मिलता जो कि मैंने लिखा हुआ था। तो दिस इज माय शेयरिंग। अगर इससे किसी को कोई भी फायदा हो रहा है तो यस, आई थिंक प्रैक्टिसेस मेरी हो रही हैं, आई डू। तो यस, थैंक यू दीप्ति जी, Amazing. एंड थैंक यू प्रिया, एंड थैंक Congratulations. यू एवरीवन, एडमिन एंड अनु, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे। Yeah. अनु ही मैं बोलती हूँ जिसने पूरा वो Anuradha क्रिसमस का पहना Shah हुआ है, from Mumbai. फ्रॉम बॉम्बे। थैंक यू सो मच। Yeah, this is like, thank you so अब मेरे much. को And आशीर्वाद enjoy. चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए कि कुछ थोड़े से चैलेंजेस जो भी हैं उनका थोड़ा बस सा अब तो आप क्रिएटर वाले थ्रोन पे बैठ जाया कीजिए। जब भी वो होना कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ पे कुछ क्रिएट करना है, तो एक गोल्डन बड़ी सी चेयर है और वो क्रिएटर्स चेयर है, आप उस पे बैठ के क्रिएट कर लिया कीजिए। अभी तो सारे टूल्स हैं आपके पास, एंड ऑफ थैंक कोर्स यू यू आर गोइंग सो टू मच, अचीव एवरीथिंग। या थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच, द क्रेडिट गोज टू यू दोबारा हमें हमारे से मिलाने के लिए। हम Oh, so sweet. सारी Thank you बहनें so आपका much. पूरा कर, थैंक यू सो मच। Thank you. रितु, तुम्हारा मेकअप हो गया? Look at this drama girl now. Enough, you can come with less of makeup, which is okay. Yes. Oh, Good Miss morning. Santa Claus. Merry The lady. Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas. सबसे पहले जिनका बर्थडे उनको मैरी क्रिसमस, जिनके एनिवर्सरीज उनके लिए मैरी क्रिसमस, सबको बहुत सारा मैरी उनके क्रिसमस। मम्मी पापा, भाई बहन, स्पाउसेस का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, उनको भी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी बर्थडे। यस यस यस। आज मैंने मैरी क्रिसमस के ओकेजन के लिए एक छोटी सी पोएम लिखी है। मैम कैन आई स्टार्ट? ऑफ कोर्स, एवरीबडी इज लुकिंग फॉरवर्ड, बिकॉज हर फेस्टिवल को तुम इतने ग्लोरीफाई करके मनाती हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। हर फेस्टिवल के इतने मायने हो जाते हैं ना आपकी वजह से। सेशन में भी। SL, a group of full of Santas. Here are almost all our Santas. सेंटा बनकर यहाँ हर कोई खुशियां ही खुशियां फैला रहा है। सेंटा बनकर यहाँ हर कोई सभी को बहुत सारे गिफ्ट्स देता जा रहा है। कोई बड़ा सेंटा है, कोई है छोटा सेंटा क्लॉज। इस ग्रुप में लगता नहीं है खुशियों पर पॉज। यहाँ मैजिक बॉन्ड खूब यूज किया जाता है। यहाँ मैजिक डस्ट बिखेरा जाता है। यहाँ खाने पीने पर भी जादू डाला जाता है। यहाँ बस जिंदगी में सबके जादू ही जादू नजर आता है। यहाँ हर दिन गिफ्ट मिलते हैं हंसियों के। यहाँ हर दिन गिफ्ट मिलते हैं रोशनियों के। यहाँ हर कोई एक दूसरे की विशेष पूरी करना चाहता है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की ड्रीम लिस्ट पूरी करना चाहता है। एक दूसरे पर बस प्यार ही प्यार बरसाता है। यहाँ हर कोई मुझे सैंटा क्लॉज नजर आता है। यहाँ बहुत बहुत सारे हर दिन होते रहते हैं मैजिक्स एंड मिरेकल्स। सबको सबकी तरफ से मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। Wow, thank you so much, and you're looking very pretty. And did you see her mustache, ma'am? उसने मूछ भी बना रखी है व्हाइट कलर की सैंटा। दाढ़ी भी बना दी है उसने। हाँ, आज मैं इससे She क्रिसमस has ट्री भी totally done the बनवाऊंगी। drop. तभी मेकअप में टाइम लग रहा था। हाँ, सारी पेंटिंग वेंटिंग करनी थी ना। हाउ Yes. ऑसम। या तो तुम्हारा मूछ और दाढ़ी दोनों है, सिर्फ मूछ नहीं, दाढ़ी भी है इसकी। दाढ़ी भी है हाँ, प्लीज। इट्स अ होल थिंग, होल थिंग। ये मैं वही ट्राई कर रही थी हाँ, कि वही तुम कर रही थी। कौन से पेंट से किया तुमने कि चौक से किया है? मैम वो पहले वो क्रेयॉन से किया, व्हाइट क्रेयॉन कलर से है, उससे नहीं आ रहा था, फिर मैंने आटा ऑयल लगा पेस्ट लेती। ऑयल आई नो, पेस्ट ऑर्गेनिक भी होता। And लिक्विड twinkling lights आफ्टरवर्ड्स। also, रितु तुमने लाइट्स भी ऐसे कर रखे, ट्विंकलिंग कर रखे हैं क्या? वो जो ऑन ऑफ हो रहा है लाइट, या फिर वो वैसे ही है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है? नहीं, वैसे वाली तो बाय डिफॉल्ट ही हो रहा है, लाइट तो हो रही नहीं है। यूनिवर्स इज विद Santa यू। Claus is making the magic happen now. ये ना छोटी सी सैंटा है, हमारी छोटी सी सैंटा है, बड़ी हाँ क्यूट सी। हाँ, इसीलिए मैम बोला था ना, इसने कोई बड़ा सैंटा है कोई छोटा सैंटा है, तो ये छोटा सैंटा है, छोटी सी इसने अपने सैंटा आप है, के पर लिए इसके जवाब इसके दिया ना काम सारे मम्मी। बड़े,
पर उसके काम सारे बड़ों वाले हैं, है छोटी हाँ, सी। सोच और काम, सोच हाँ और काम हाँ दोनों। हाँ, Thank it makes Power every pack है, Christmas power so pack special. Santa. Amazing. Lovely. Thank you Lovely Thank so you, poem. much, ma'am. Ritu. Thank you so बहुत much. ही cute poem थी, and thank you for making so much meaning out of every occasion, every festival. So thank you so much, and God bless you, and see you in a while today. Yes, yes. आ जाना जल्दी से टाइम पे, फिर मैंने तुम्हारी वजह से क्रिसमस ट्री पूरा नहीं बनाया है, सो आई थॉट रितु आएगी तो हम बनाएंगे साथ में, Thank you, ma'am. Thank you. Thank you है ना? so तो much for आ giving me जाना, फिर this हम दोनों privilege. बैठ के बनाएंगे सैंटा क्लॉज का। सो जो बोनी एम आई ग्रुप है उसके क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं, तो बचपन से मैं बोनी एम के सारे, उसका अगर यूट्यूब पे डालो क्रिसमस सॉन्ग्स बाय बोनी एम तो वो सारी लिस्ट आ जाती है, तो मैं पूरे दिन वही सुनती रहती हूँ क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस ईव पे। और बोनी एम मेरा वन ऑफ द फेवरेट ग्रुप है, मतलब मैं स्कूल में थी तब से, वो क्या बहुत पुराना ग्रुप है, मैं स्कूल में थी तब से मैं बोनियम को बहुत पसंद करती हूँ। सो एवरीवन हियर हु इज इन देयर लेट 30s and 40s वुड नो बोनियम। Yes. Yes, And ma'am, ma'am. बहुत thank you सुंदर so क्रिसमस much सॉन्ग्स for होते हैं। making this Christmas so special. मैं भी कॉन्वेंट स्कूल की हूँ, पर with years ना, मतलब Christmas just was like that. हाँ, Christmas है and this and that, but this year like really went out and means मन से we celebrating Christmas, the Christmas tree and Even I am everything. from convent, Kamal School, Hazaribagh. Oh. Yeah, So, So and this is thank the you, only ma'am. festival which is global. Yes. global. This is Yeah, the yeah. only festival that the world celebrates. And, like all my mentors have told that never consider that, you have to glorify India on a global platform. Take India on a global platform. So, that matters. So, of course, like, Diwali and all, we've always been celebrating. I mean, that's also that, festival of lights and all that. It's beautiful. हम दिवाली पूजा भी बड़े अच्छे से करते हैं, घर में celebrate करते हैं, specific खाना बनाते हैं. But somehow, because maybe it is so close to the new year, so it sets the celebration into rolling, throughout. So yeah, it is actually beautiful. I've never seen so many people in a mall yesterday. I think there were lakhs and lakhs of people yesterday when we went to eat out at Delhi Heights, and well, it was All really. restaurants were full, ma'am. Oh, I swear. So I wanted to have, like, the specific thing I like to have, bologe unhealthy khati hai. But yeah, I love margarita pizza. So I love that at Delhi Heights because unka base bahut acha hota hai. Aur bilkul, something like how Bharti cooks, because I love her cooking in any case. So बेस भी वो बनाते हैं, उनका चीज भी अपना खुद का होता है. सो आई वांटेड टू हैव दैट मार्गरीटा पिज्जा एट दिल्ली हाइट्स, एंड हमको रिजर्वेशन तो मिल नहीं रही थी, और रिजर्वेशन हमने पहले कराया हुआ नहीं था, तो वहां पे गए, फिर हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है तो सोडा बॉटल ओपनर वाला पे बैठ जाते हैं. फिर उसके बाद देन वहां पे भी मेन्यू इज लाइक ऑल वड़ा पाव एंड एवरीथिंग, देन वी सॉट सोडा बॉटल छोड़ के, देन वी वेंट टू सोशल इज ऑलवेज ट्राइड एंड टेस्टेड. So, but then the music is so loud and we're not like lunch pe the party mood mein and all that. So I didn't want that music, wanted to be a nice, peaceful, calm, happy lunchtime. And then the moment we sat at social, we got a table immediately, and it was around 2:30, quarter to 3 or something. Then I thought that let me just go and inquire at Delhi Heights if there's a table available, or intention मैंने पहले ही किया हुआ था, लेट इंटेंशन किया था, मैग्निफिसेंट आउटकम. एंड फिर उसके बाद जस्ट वेंट एट दिस थिंग. सो ऑफ कोर्स आवर नंबर वाज ऑलमोस्ट एट नंबर 8. देयर वर 7 people before us who were waiting for the table in line, and I went there and asked this guy that is there any table, I just came here to check, otherwise we already have a table at social. So he said that हाँ एक table खाली हुई है, and that was a cabana, which is one of the best tables. And we got that cabana, and I was so thrilled and so happy that there were 7 people before us. Then I really put a lot of magic dust on those 7 people also, that they would get the best places to eat and a gala time here, on Christmas Eve. And that is how it went, and we got a cabana at Delhi Heights, like without making a pre-reservation. And it was such an awesome food. I can't even begin to tell you, like ordered for 5-7 things, and it was really fun. So yeah, I mean, that's how life unfolds as. So it's so much of celebration everywhere. I think till the New Year's is going to be like that. So let's keep our energies high, and energies
attached to the word celebration, it becomes very, very high frequency. So isliye. So yes, Ritu, the Christmas tree is waiting for you to be decorated. And we don't make a wo nakli, we have a real Christmas tree, asli wala. मैम Even मेरे me. ड्रीम लिस्ट में से और भी 8 ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। वो कहते हैं ना अच्छा। कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में आप जो भी बोलो वो होता जरूर है। और जिस दिन हाँ, से ये मैजिक हमारा वो था ना मैजिकल डे वाला, उस दिन हाँ, से मेरी जिंदगी में बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं। मैं प्रैक्टिसेस पहले करती थी बट इतनी ज्यादा डिलीजेंटली नहीं करती थी, बहुत ज्यादा ना वो हम्म, टेक्निकल माइंड मेरा बहुत चलता है, वो चलता था। हम्म, लेकिन अब भी अनु ने प्रिया दी ने हमारा ये वो हुआ था, अनु ने सजेस्ट किया था कि हम लोग ना लास्ट नवंबर में बोला था हम लोग नेक्स्ट मंथ से ना अच्छे से प्रैक्टिसेस करेंगे। प्रिया दी से कि वाई नॉट अभी से क्यों नहीं करते। तो हमारा वो ट्रायल वाला चल रहा था नवंबर से कि हमको पूरी पूरी प्रैक्टिस करनी है 28 डेज की। तो वो जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, बहुत सारी चीजें चेंज होती जा रही। पिछले 3-4 दिन में इतना सब कुछ अमेजिंग चलता जा रहा है ना, मतलब मुझे वो लग रहा है कि हाँ मैम बिल्कुल सही बोलती, 3 महीने पहले तुम प्रैक्टिस करो पूरी शिद्दत से, फिर तुम्हारे ड्रीम पूरे नहीं हो रहे, फिर काम पूरे नहीं हो रहे, फिर मुझे बोलो, फिर मैं बताऊंगी क्या right. करना है। लेकिन नहीं, वो मैम वो पता चल रहा है मैम, बहुत बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है प्रैक्टिस से ना। जितना मैं फिर पूछती हूँ इन लोगों से, प्रिया दी से, अनु से पूछती हूँ जो समझ में नहीं आती कि हाँ मैं ये इतने टाइम से ऐसे कर रही हूँ, तो क्या मैं सही कर रही थी या गलत कर रही थी, क्योंकि शायद वो इसलिए वो कुछ पूरा नहीं हो रहा। बट नहीं मैम, बहुत मतलब कल इतना वो 3-4 दिन से सब लोग ना अनएक्सपेक्टेड मिलने आ रहे हैं या बाहर जा रहे हूँ, वो यही हो रहा है। मतलब और आज देखो आपसे मैं ना बताना नहीं चाहती थी, मैं बोलता मैं कल बताऊंगी। आपके घर आने का आज इतना बड़ा सपना पूरा होने वाला है। फिर वो कहीं ना कहीं वो होता है कि हमें सपना था ट्रेन, तुम्हारा मेरे घर आने का? तुम मैम मेट्रो में वो बैठ जाती है और मैं तो मेट्रो स्टेशन पे ही रहती हूँ, तुम उतर के आ जाती है। इसे सपने की मैम क्या बात है इसमें? मैम वो ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है मेरे। और वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, वो सब कुछ आप मुझे वो सारी खुशियां देने वाले हो जो कब से बचपन से सालों से माइंड में थी कि मुझे ये करना है, मुझे करना है। मैं उस दिन ना अपनी कोई पुरानी पिक्स देख रही थी, तो मेरा गोवा वाला जो ट्रिप था, मैंने उस दिन देखा कि वहां पर एक मेटल का ना ऐसे गिटार सा बना हुआ था और मैं वहां पे ना ऐसे डांस कर रही थी, ऐसे से मस्ती कर रही थी, बैकग्राउंड में बार में म्यूजिक चल रहा था। तो वो कहीं ना कहीं था मुझे गिटार प्ले करना है और मैं भूल चुकी थी। और अभी मैंने पिछले 2-3 महीने खूब गिटार बजाया, खूब वो नीज का लेकर आई हुई थी। और तो मुझे लगा कि हाँ वो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे था, मैं भूल चुकी थी। तो इसलिए मैम बोलती है ना, जो सोचो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, वो कहीं ना कहीं वो जाएगा और वापस आएगा ही आएगा। तो इसलिए मैं उस दिन से इतना वो खुश हुई ना, मतलब मेरा मन कर रहा था मैं ग्रुप में शेयर करूं, बताऊं कि देखो ये मेरी पुरानी वाली वीडियो में गिटार ऐसे कर रही हूँ और ये सच्ची वाला बजा रही हूँ मैं। मतलब मेरे को बहुत मजा आ रहा है। ये मैंने 15 दिसंबर को ही देखा था गिटार वाला कि मैं ऐसे बजा रही थी। मतलब इसलिए खुल के जियो, खूब सारे सपने तुझे देखो। देखा तो ये जाना सनम, Wow. प्यार होता है दीवाना सनम। बस इतना ही। बाकी घर आओगी तो सुनाऊंगी। प्लीज मैम पूरा सुनाएं। हम भी सुन लेते मैम। मैम Beautiful. प्लीज मैम। नहीं नहीं, वो गिटार के नाम ब्यूटीफुल से मुझे याद वॉइस। आ रहा था क्योंकि शाहरुख खान का वो यही वाला सॉन्ग था। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में, क्या है आगे, बस मर जाए। जाते हम। मर जाए हम। नहीं नहीं, या हमें मरना नहीं, बसना मरना तो है। है ही नहीं ना, जी जाए हम। बस बसना है, जी जाए हम। आई नो, एक जगह टिके नहीं रहना है, फ्लाई इन द स्काई एंड फ्लाई सोर हाई इन द skies like a phoenix Ma'am, rising from the Bharti's hand ashes. was raised, ma'am, if we have time today. Okay, yeah, sure. I didn't see Bharti's hand, otherwise I would have called out. So, Aarti, Ritu, Aarti. thank you so much for sharing the poem and everything, and I'll see you around soon in a while. हम नहा धो के तैयार हो जाएंगे आपके आने के पहले। हमारा जिम वर्कआउट द्रौपदी का चीर की तरह एक्सटेंड हो जाता है छुट्टियों वाले दिन। माय ट्रेनर like till 11 o'clock he keeps making me work out, so I'll come on time, I'll do everything on time so that I'm there to welcome you. ठीक है? चलो, see you. Yes, Bharti, would you want to share? मैम आरती
Aarti. Okay, Aarti. Oh, welcome back to Delhi. Delhi. Good morning, ma'am. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ये वाला साल इतना अच्छा बनाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। मैंने मार्च में ज्वाइन किया था एंड लाइफ हैज नेवर बीन द सेम आफ्टर दैट, एंड इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू, और कोई नहीं है उसमें। एंड माय मदर आल्सो सेज दिस कि टोटली 360 डिग्रीज चेंज कर दिए दीप्ति मैम ने तेरी लाइफ। एंड समटाइम्स जब मैं डिप होती हूँ तो वो वही कहती कि तू दीप्ति मैम के पास चली जा, उनसे बात करके समझ ले। मतलब नाउ शी आल्सो सेज कि मेरे पास नहीं है तेरी आंसर्स, तू उनसे पूछ ले कि क्या है। सो मच सो दिसंबर में बहुत सारे फंक्शंस रहे, एंड मेरा मेन वो था कि मैंने स्टार्ट किया था माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। मैंने वो बहुत आई थिंक 21 डेज 21 टाइम्स लिखा मैंने वो पहले। उससे कोई फर्क नहीं लग रहा था मुझे, लिखने से नहीं मजा आ रहा था, मतलब 21 टाइम्स में पता नहीं चल रहा था, मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। तो मॉर्निंग में मैंने माय लाइफ इज अ सेलिब्रेशन मैंने फिर 66 टाइम्स मैंने लिखा 21 डेज, एंड उसके बाद मैंने लिखा 99 टाइम्स इन अदर 11 डेज। और उसके बाद मैम बहुत, मतलब ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया ना लाइफ के अंदर। दिसंबर, कंप्लीट दिसंबर मैं घर में हार्डली 4 या 5 डेज ही रही हूँ। पूरा दिसंबर मेरा ट्रैवलिंग में रहा है, एंड जिन 4-5 डेज में मैं रही हूँ, आई हैव बीन पार्टिंग दैट दोस 4-5 डेज। तो मतलब दिसंबर में तो नॉट इवन 1 डे आई वाज एट होम जहां पे मैंने तीनों मील्स घर पे खाए हों, ऐसा भी नहीं, कोई एक दिन भी नहीं गया दिसंबर। बाय गॉड आरती, फिर भी तुम्हारा इतना वेट लॉस हो गया। यस। एंड ये भी तो एक victory है। yes ma'am, and I have lost my weight very easily and effortlessly। जैसे आपने बताया था कि I am losing my weight easily and effortlessly, सिर्फ वाटर फॉर्मेशन से मैंने वो किया है, कुछ भी नहीं मैम, इस वाटर को ही मैं करती थी कि आई एम लूजिंग माय वेट इजीली एंड एफर्टलेसली, एंड इट हैज कम डाउन टू 59.25। आज भी मैंने अभी भी आज भी करके देखा तो सेम ही आ रहा है। तो मतलब 54 से 59। मैम थायराइड उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा 64 से 64 से 59 नहीं हुआ, से 64 से 59 हुआ। हाँ 64 से 59 पॉइंट समथिंग आने में मुझे बहुत पहले, मतलब अगर मैं पहले बात करती थी तो मैं शायद नहीं कर पाती थी। एंड मैम इतना बाहर खाना खाने के बाद भी आई एम एबल टू मैनेज इट नाउ। सेकेंडली माई लाइफ हैज बिकम अ सेलिब्रेशन, एंड जब मैं दिसंबर में, आपने जब ये वाली बुक शुरू करी थी तो फर्स्ट 3 days आई डिडंट डू एनी प्रैक्टिसेस, फर्स्ट 4 days आई डिडंट डू एनी प्रैक्टिसेस, एंड देन आई कॉल्ड यू कि मैम मैंने फर्स्ट 4 नहीं करी है तो हाउ शुड आई स्टार्ट विद इट। तो आपने मुझे ये बोला था कि उस मोमेंटम में रहने के लिए व्हाट आर यू डूइंग। तो मैंने कहा था मैम मैं तो सिर्फ एक काउंट माय ब्लेसिंग्स करती हूँ एंड मैजिक रॉक करती हूँ, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर रही थी उस टाइम पे 4 days, क्योंकि मैं मैरिज में गई थी। तो आपने बोला कि ठीक है, तो तुमको मोमेंटम में आने के लिए तुम देखो, दीज वर योर वर्ड्स, कि तुम मोमेंटम में आने के लिए देखो कि क्या कर सकते हो, मतलब लिखो जितना लिख सकते हो। उस टाइम तो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने उस दिन बैठ के डे 1, डे 2 एंड डे 3 किया। फिर मैंने स्टार्ट किया कि डे 1 मैंने लिखा, फिर डे 2 दोबारा से किया, डे 3 किया। तो डे 3 जब मैं करती थी तो डे 1 डे 2 करा, फिर डे 4 करना था तो मैं डे 1 डे 2 डे 3 फिर डे 4 पे आती थी, एंड दैट बिकेम माई हैबिट। तो आज की डेट के अंदर वट एवर विच एवर डे इज देयर, तो मैं उससे पहले सारे के सारे डेज करती हूँ, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 इन द इवनिंग। मॉर्निंग में जैसे आपकी प्रैक्टिस है वो कर ही रही हूँ, उसके अलावा इन द इवनिंग आई टेक आउट स्पेशली 1 hour फॉर दिस पार्ट, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, कितनी भी बिजी हूँ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। जैसे अब डे 16 है, डे 17 है, तो आज फर्स्ट डे 18 है तो आप 7 पूरी 18 पूरे, प्रैक्टिसेस करो। यस मैम, तो तो मैं मतलब कल डे डे 1 19 है तो आप पूरी 19 पूरी करो। 19 प्रैक्टिसेस करूंगी, एंड दिस हैज, मतलब इससे बहुत एक शिफ्ट आया है, ऑल ऑफ अ सडन एक ड्रास्टिक शिफ्ट आया है मेरी थिंकिंग में भी, द वे, मतलब अब ग्रेटिट्यूड में भी उसमें फर्क दिख रहा है, क्योंकि
इतने दिनों से मैंने मैजिक रिलेशंस जैसे कर रही हूँ, तो उसका भी मुझे पता चल रहा है कि अच्छा हम एक दिन करते हैं तो उसमें एक करके उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो हो गया, बट अभी आजकल क्योंकि मैं डेली कर रही हूँ तो मैं कंटिन्यूअसली 3 लोगों के लिए ही कर रही हूँ, सेम एंड 3 लोग। सेम 3 के लिए कर रही हूँ मैम। आपने एक बार सरिता मैम को बताया था कि 1 मंथ करके देखो, बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपने बहुत पहले शेयरिंग में बोला था, तो वो एक दिमाग में था कि वो वैसे नहीं हो रहा था, बट अभी क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उससे बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, इनफैक्ट मनी में बहुत एक चेंज आ रहा है। तो मतलब मैम, माय हस्बैंड हैड लेफ्ट वन ऑफ हिज जॉब्स इन अराउंड 7 years बैक, एंड दे डिडंट गिव अ कोई रेजिग्नेशन लेटर वगैरह कुछ उन्होंने दिया नहीं था, एंड इवन वी हैड फॉरगॉटन कि कौन सी जॉब थी वो, क्या था नहीं था, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे कॉल्ड अप एंड दे सेड कि हमें वो क्योंकि उनका ऑडिट हुआ है तो दे वांटेड टू क्लियर ऑल हिज दिस थिंग, एंड They एक called बार up this week after 7 years. आफ्टर Okay. 7 years, yes ma'am, after This 7 years, week, the week that the went by. yeah, कि your pending amount has this is the amount that has been pending since 7 years, उसको आपको देना है क्योंकि हमारा ऑडिट आया है एंड एवरीथिंग, एंड दैट इज एग्जैक्टली द अमाउंट जो मैंने कभी अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मेरे बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए, एग्जैक्टली द सेम अमाउंट। उससे मैं, आपने एक बार बताया था कि मैं ऐसे ही लिख देती हूँ कि मेरे को इतना हाँ। अमाउंट चाहिए, एंड देन आई मैं गिव इट। ऐसे ही लिखती हूँ, इसी से रिलेटेड मेरी भी शेयरिंग है जो मैंने कल रात को मुझे पता लगा था। सो आप बताओ, फिर मैं बताती हूँ अपनी शेयरिंग। एंड मैम ये मनी का बहुत मतलब, एंड इट इज अ ह्यूज अमाउंट, इट इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट दैट हैज बीन, एंड कभी सोचा ही नहीं था कि वहां से भी आएगा, इनफैक्ट हमें तो पता भी नहीं था, एंड उन्होंने ही अपने आप बताया कि नहीं 1% और 10% ऑफ योर सैलरी वॉज बीइंग डिडक्टेड एवरी मंथ, तो वो भी हम आपको दे रहे हैं अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो ये मनी का हुआ। रिलेशनशिप्स में जिन 3 लोगों के साथ मैंने किया, अ, वो इतने खराब रिलेशनशिप्स नहीं थे, बट वो ऑफ एंड ऑन होते थे, बट उसमें मैंने एक अब बहुत मेजर शिफ्ट देखा, बहुत मेजर शिफ्ट देखा। मॉर्निंग्स में जैसे आप मैजिक मॉर्निंग होती है, अब हम तो मैजिक मॉर्निंग करके हम फिर खत्म कर देते हैं, तो इवनिंग में वेन एवर मैजिक मॉर्निंग कम्स, तो मैं उसमें लिखती हूँ, 33 पॉइंट्स लिख देती हूँ, जैसे आप थैंक यू टू द वॉश बेसिन, थैंक यू टू द टैप्स, थैंक यू टू द टॉवल रॉड, थैंक यू टू दिस थिंग। तो मैम उससे ना जैसे लिखने हमने 108 वैसे भी लिखने ही थे, तो वर्क्स लाइक मैजिक में भी मैं उसको डिवाइड कर देती हूँ कि 66 इधर कर दिया, 33 इधर कर दिया, तो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड डिवाइडिंग इट, एंड उससे बहुत एक फर्क दिख रहा है। वर्क्स लाइक मैजिक में भी करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, ऐसे शायद मैं उतना नहीं करती थी, लिखती थी बट वो वाली वो नहीं आती थी, फीलिंग नहीं आती थी, बट इसको करने से बहुत बहुत मजा आ रहा है। I'm so happy to see you so happy, and such a huge shift from when I met you till now. You are a different person, a different Aarti Gupta. Everything about you is different. Your smile, थैंक यू। your eyes, your hair, your skin, यस your मैम, voice, the थैंक यू। content of your conversation. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, आई हैड लॉस्ट माय कॉन्फिडेंस ओनली, टोटली मैम, बिल्कुल कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। Now you give confidence to others. Yes ma'am. So In are fact, your family and relatives, and when you visited all these places, Goa and Mumbai and all that, so did you like, didn't people observe such a huge shift in you that I have seen? yes ma'am, in fact, Bombay was not in my this thing when I got that marriage Itinerary. invitation. Huh. Yeah, when I got the marriage invitation, uh, I said no, I don't want to go because I didn't have a very good cordial relationships with my cousin. But all of a sudden, she called me. She said, "नहीं यार, please, you are the only cousin which I have." मतलब मैम इतना प्लीड तो कभी मैंने किसी ने नहीं सुना होगा कि इतना प्लीड करके मुझे, मतलब शी सेड कि नहीं नहीं तुम्हें आना है, तुम्हें ये वाले काम करने हैं, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें वो करना है, and the amount of respect and love I got from her. All these years, I had been wanting to have that kind of a sister, and now I got it.
सो मैम दैट वाज अ मेजर शिफ्ट. मतलब मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि आई वुड बी गोइंग देयर टू हर प्लेस. एंड टोटली मैम, जैसे आप कहते हो ना कि उधर उधर से पता चल जाता है. हम तो देते ही है, बिकॉज आई हैड रिटन लॉट फॉर हर, बहुत लिखा था. बट मैंने बहुत पहले लिखा था, जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करी थी. एंड देन आई जस्ट फॉरगॉट. बट उसका रिजल्ट अब मिला जाके. मतलब, एंड जैसे आप कहते हो ना कि यू लीव इट टू द यूनिवर्स, तो वो चीज थी मैम. बहुत बहुत ज्यादा फर्क था. इनक्रेडिबल. यस जब वो मैम. बोलते हैं कि आरती ये तुमको क्या हो गया है, देन हाउ डू यू रिएक्ट, व्हाट डू यू से? यस मैम. सो जब कोई मेरे को ऐसे बोलता है तो कई बार तो मैं टशन में भी बोल देती हूँ, बिकॉज आई एम वांट टू लीड एंड शाइन. You are born to lead and shine. That's very, मतलब very obvious. इनफैक्ट मतलब आई हैड मतलब मतलब डिफरेंसेस तो नहीं बोलूंगी, बट माय क्लासमेट्स यूज्ड टू फील दैट आई वाजंट डूइंग द जॉब. तो दे यूज्ड टू लुक डाउन टू मी कि मतलब ये जॉब नहीं करती है, घर पे है, तो ठीक है, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ हर. तो मतलब एवरीबडी यूज्ड टू से ये वाला काम कर देना, ये वाला काम कर देना. तो समटाइम्स आई यूज्ड टू फील कि यार एवरीबडी इज ट्रीटिंग मी लाइक अ डोरमैट. बट दिस टाइम जब किसी ने कुछ बोला एंड आई गेव इट कि नहीं यार, ये तो तुमको खुद ही कर, मतलब ऐसे करके बोला. तो ही आस्क्ड मी कि मतलब तुमको ऐसा क्या हो गया. मैं मतलब उसने बड़े उससे मतलब बोला कि मतलब हाउ कैन शी से नोट फॉर अ वर्क जो कि हमने बोला है. तो मतलब पहले तो उनको लगा नहीं, कि फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने बोला बिकॉज आई एम वांट टू लीड एंड शाइन. एंड दे वर लाइक कि ये क्या हुआ इसको, क्या मतलब बोल रही है? मतलब उनको, मतलब आफ्टर 27 years ये बोल पाई मैं. Amazing. आरती को याद दिलाना Congratulations पड़ा. and wish you more and more. आरती You are इज giving so much of हाँ insights and, like diligency to all the practices. In fact, Ritu also said the same thing कि जब से मैंने practice करनी शुरू की है, तब से वो लगती बहुत छोटी है कि क्या big deal, 5 points ही तो लिखने हैं किसी के बारे में, या health के लिए वही तो करना है. That thank you for all the health and this thing, the gift of health is keeping me alive. बोल के पढ़ के क्या ही हो जाएगा. कभी कभी ऐसा लगता है, but we don't know the difference because these books are so well thoroughly researched with a research team from all over the world, and then the practices are made for us. So it's actually incredible, मैम जब हम amazing. नोट को भी पकड़ते हैं ना, तो वो हम जब डेली पकड़ रहे हैं, जब हम डेली करते हैं ना, एंड उसको फिर जैसे हम लिखते भी हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. तो वो जब डेली हम लिखते हैं ना, हम उस दिन लिख के फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम डेली नहीं करते हैं. बट जब हम डेली कर रहे हैं ना, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आ रहा है. फिर वो gratitude एक एक सेल में घुस जाता है यस on मैम. different aspects because we need to change all the aspects of life, है ना? यस मैम. जैसे मैजिकली, मतलब जो पीपल हु मैजिकल हाँ, पीपल हु, तो मैम जब आप made a उनको difference याद है. करते हो ना, आप उनको याद करते हो ना, और फिर आप हर रोज किसी नए 3 को याद करते हो. एंड अभी ऑफ लेट तो मैंने कई बार कॉल भी कर देती हूँ कि अच्छा, मुझे इतनी ज्यादा अंदर से वो फीलिंग आती है कि नहीं यार, आई हैव नॉट सेड थैंक यू टू देम. तो कई बार मेरे ऐसे भी होता है कि मैं कॉल करके फिर मैं बताती हूँ कि नहीं नहीं, यू हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ एंड थैंक यू फॉर दैट पार्ट. तो मतलब वो भी बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है उस टाइम पे कि वी नेवर सेड थैंक यू टू द अदर पर्सन ऑल्सो. पहले वो शायद ईगो में नहीं हमने कभी बोला था, बट अब वो ईगो नहीं रही है ना, तो अब वो थैंक यू बोलना भी बहुत अच्छा लगता है. Wow, wonderful, Aarti, and wish you many more थैंक यू मैम. थैंक यू success. सो मच फॉर Thank मेकिंग you माई and लाइफ. see you on 30th. यस मैम, यस मैम. आई कांट लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू मिस यू. That would be a miracle. यस. थैंक यू सो Thank मच. you so much. थैक यू मैम. Thank you. Hi, Then, ma'am. yes, Sunita ji, yes. Sorry, उस समय मेरे husband around थे तो प्रिया बोली, but I was silent. Tomorrow is my husband's birthday, and I'm Oh. giving an iWatch because he's just started into his fitness. So I want to saturate with your blessings and what affirmations, and then gift him for his success. That And cell phone. Yeah, because cell phone. iWatch, sorry. iWatch, okay. Yeah, So of course that will it'll open the world of excellent health for him because watch is so much to do with time. So you can have your affirmation on time that
he'll be able to balance his time so well and give time to everything, including himself. And then, of course, watch is a lot of fitness. So because it does amazing relationships, because it had too many contacts and all that. So in all 4 areas, make affirmations of what you would want for him. When it comes to the success, of course, there are 4 areas of life. First, of course, is Health and success. health, relationship, money, and success, Yeah. and career. So in all 4 areas, you can make your affirmation, saturate that, and say thank you that this watch is opening new doorways, will open new doorways in his life towards success, growth, progress, victory, amazing health. And that's it. And then you are there, no, as a magnet of happiness in his life. So Thank- continue being that. Thank you so much, ma'am, for the blessings And and you're looking so pretty, like Saint Nicholas with your red. Thank you. Have you. Merry Christmas. Thank you. Merry Christmas to you too. Thank you so much. And bye-bye, and enjoy a life full of celebration, and be very, very grateful for this beautiful year, and be ready to welcome the next one, which will be the best year of our lives. Thank you, Okay, ma'am. thank you so much. Thank you so Bye. much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas.